Record man, play my song on the radio. You too busy trying to find that blue I saw. I let my black hair grow and my weed smoke, and I sweat too much on the regular. We gon' let them hits fly, we gon' let it go. If it ain't next so then it gotta go. I just won a new award for a kid show. Talking about a face, coming off a bag of blow. I'm like, goddamn bitch, I am not a teen choice. Goddamn bitch, I am not a bleach boy. Whip game, make a nigga understand though. Got that Hannibal, silence of the Lambo. Hit the gas so hard, make it rotate. All my niggas blew up like a propane. All these R&B niggas be so lame. Got a sweet Asian chick, she gon' loan me. You know me, you know me, you know me. Every time you try to forget who I am, I'll be right there to remind you again. You know me, you know me. Said I'm just tryna swim in something wetter than the ocean. Faded up a double cup, I'm mixing up the potion. All I wanna do is make that money and make dope shit. It just seem like niggas tryna sound like all my ocean. Everybody knows it, all these niggas lonely. Platinum off a mixtape, sipping on that codeine. Poet in my trophies, rolling to my nosebleed. I'ma keep on singing while I'm burning up that OG. All my niggas get it, they make money on the low. Rock a chain around their neck, making sure I'm good at home. When I travel around the globe, make a couple million show. And I come back to my city, I fuck every girl I know. Used to walk around with a slouch, had a mattress on the floor. Now my shit straight, eating all day, tryna lose weight. That good sex will sweat it out. Hotel bed springs will wear it out. I ain't gotta tell you, cause you know me. You know me, you know me, you know me. Every time you try to forget who I am, I'll be right there to remind you again. You know me, you know me. Why don't you shake some, fold it down, don't you break none, baby girl, won't you work some, fold it down, don't you hurt none, baby girl, won't you shake some, fold it down, don't you break none, baby girl, won't you work some, fold it down, don't you hurt none, cause you know me. Meme numbers will have to make the string balance. You're giving zero index है. हमारे पास एक स्ट्रिंग है जीरो इंडेक्स मतलब इसके स्टार्टिंग इंडेक्स जीरो सा बोल रही है. ये बोल रहा है वो इवन लेंथ का मतलब 2468 10 12 ऐसा मतलब 2 से डिवाइड करे तो इक्वल्स टू जीरो. द स्ट्रिंग कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली n by 2 ओपनिंग ब्रैकेट. मतलब ये बोल रहा है कि इसमें आधे ओपनिंग ब्रैकेट्स होंगे और आधे क्लोजिंग ब्रैकेट्स होंगे. और तो आउटकम क्या या सॉरी रिक्वायरमेंट क्या ये बोल रहा स्ट्रिंग इज कॉल्ड बैलेंस इफ एंड ओनली इफ. स्ट्रिंग बैलेंस होगा इफ एंड ओनली इफ. अगर खाली होगा तो बैलेंस होगा. मान लिया इट कैन बी रिटन एज ए बी वेयर बोथ ए एंड बी आर द बैलेंस स्ट्रिंग. ये मैं बताता हूँ यहाँ पे ए बी का मतलब क्या है. इट कैन बी रिटन एज सी इफ सी इज अ बैलेंस स्ट्रिंग. यहाँ पे सी का मतलब है बैलेंस स्ट्रिंग. बैलेंस स्ट्रिंग मतलब क्या देयर इज इक्वल नंबर ऑफ लाइक बैलेंस स्ट्रिंग मीन्स ये क्लोजिंग ब्रैकेट और ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट लाइक अपने प्लेस पे हो ताकि वो लाइक अरे क्या होता है मतलब एक प्रॉपर पैटर्न जो होता है ना क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट का वो फॉर्म करे. वही उन्हीं को बैलेंस बोलते हैं.
तो क्या बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ कि हमें जो भी स्ट्रिंग दिया हुआ है वो अभी बैलेंस नहीं है, लेकिन इक्वल नंबर ऑफ ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट है। बोल रहा हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्वैप्स में उस स्ट्रिंग को बैलेंस करना है। मैंने ये सुबह में सॉल्व कर लिया था, अभी बस एक बार गो थ्रू करता। यहाँ पे एग्जांपल देखे देखो, ये बैलेंस स्ट्रिंग है। बैलेंस कैसे, ओपन हो रहा है और क्लोज हो रहा है मतलब बैलेंस है। मुझे मीठा खाना कम करना चाहिए। अरे यार, मैंने म्यूट पे सारा सॉल्यूशन डिस्कस कर दिया। मैं फिर से बताता हूँ। मैं ये कह रहा था,
मैं ये कह रहा था कि ये जो मैंने सॉल्यूशन लिखा है ये ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच है। ये नीट कोड वाले भैया ने बताया है। पता नहीं इतना लोग कैसे सोच लेते हैं, बट ठीक है, शायद एक टाइम हम भी सोच पाए। यहाँ पे उन्होंने दो काउंटर बनाया, एक एक्स्ट्रा क्लोजिंग ब्रैकेट, एक मैक्स का काउंटर। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम लेंथ के सॉरी स्ट्रिंग के हर एक एलिमेंट को इटरेट कर रहे हैं, और हम जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट इनकाउंटर कर रहे हैं, हम एक्स्ट्रा क्लोजिंग ब्रैकेट काउंटर को बढ़ा रहे हैं, और हम उसमें मैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं। मैक्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो एक्स्ट्रा क्लोजिंग ब्रैकेट है और मैक्स का काउंटर है उसमें अपेंड होता जाएगा। और अगर क्लोजिंग ब्रैकेट नहीं है तो बेसिकली वो ओपनिंग ब्रैकेट है, और ओपनिंग ब्रैकेट जब भी हम इनकाउंटर कर रहे हैं तो क्लोजिंग ब्रैकेट्स को डिक्रीमेंट कर रहे हैं, और हम रिटर्न कर रहे हैं मैक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ताकि ये हमेशा फ्लोर डिवीजन दे हमें। तो ये तो ऑप्टिमल अप्रोच है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं इसका नाइव अप्रोच क्या हो सकता है। हम्म, हम्म, ठीक है। समझ क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, हमें बैलेंस करना है। यहाँ पे ए बी का मतलब है ए हो सकता है ये, और अगर ऐसा हुआ तो भी बैलेंस है। और बी हो सकता है ये, तब भी बैलेंस है। और जब हम बोलते हैं कि ए और बी है तो बेस, अरे यार मेरा चश्मा कहाँ। हम्म, तो बेसिकली ये हुआ, फिर हमारा ये हुआ, और ये हुआ, ये हमारा ए और बी हुआ। तो ये भी क्या हुआ, ये भी बैलेंस हुआ ना, ये भी बैलेंस हुआ। ओम गण गणपतये नमो नमः, ओम नमः शिवाय। तब भी बैलेंस हुआ। इट कैन बी रिटन एज सी, सी जैसे बैलेंस, जैसे ए है वैसे सी है। तो बेसिकली यही है। तो लाइक सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे ब्रूट फोर्स अप्रोच। ये हमारे ये हमारे लिए चैट जीपीटी कर देगा। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। स्टैक स्टैक सब यूज कर लिया भाई ने। जावा कोड। लूल क्यों हो गया भाई, कंटिन्यू करना। क्या? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड
इस कॉम्प्लेक्सिटी क्या? गार्ड एंटी वाइट अप्रोच हियर। ये कैसे ठीक लगेगा? हम्म 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 हम्म। प्रॉपर्टीज में अगर मैं फिल्टर्स में आऊँ, यहाँ पे इफेक्ट्स फिल्टर में अगर मैं क्रॉप डालूँ, क्रॉप पैड, और फिर लाइक इसको राइट से क्रॉप कर दूँ 30, 30। कितना हुआ ये? इतने में काम होगा? नहीं होगा। फिर मैं इसको 500 क्रॉप कर दूँ तो बट मैं क्रॉप नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये इतना ही साइज में हो। ऐसे नहीं करना है मुझे, मुझे चाहता हूँ कुछ तो मैंने गड़बड़ कर दी। ठीक है, क्रॉप की जगह मैं क्या कर सकता हूँ? क्रॉल फालतू है, ये मुझे नहीं चाहिए था। एस्पेक्ट रेशियो, ये शायद काम का है। सेक्शन रेशियो 9, 10। क्रॉप पैड पे 500 रखता है। ये काम का नहीं है। अगर इस पे फिल्टर लगाऊं और यहाँ पे क्रॉप लगाऊं, मैं लेफ्ट से काटता हूँ 300, राइट से काटता हूँ 300। 300 की जगह मैं अगर इसको 500 कर देता
Now good. क्या कर रहा है बबुआ? This is the problem require finding a minimum number of steps to make a given string balance bracket. A balanced string can be empty or can be formed by combining two balanced string or by enclosing a balanced string with a square value. The brute force approach involves trying out all possible swaps and checking whether the results. First of all, I need to check भाई का सॉल्यूशन सही भी तो है. क्या बोल रहा? The brute force involves trying out all possible swaps and checking whether the result string is balanced. Here's a more detailed step-by-step. Generate all possible swaps. Use two nested loop to iterate over the order pair of indices in the string. Swap the variables at the selected indices. Check if the swapped string is balanced. Implement a function is balanced that checks whether a given string is balanced or not. The function can use a simple counter. The function can use a the function the balance while iterating through the characters of the string. If at any point the balance becomes negative, the string is not balanced. Calculate the minimum number. Calculate the minimum swaps. If the swapped string is balanced, calculate the number of swaps needed to reach that configuration. Update the minimum number of swaps accordingly. Return the result after checking all possible swaps. Return the minimum of swaps needed to make the string balanced. Well, this it has टेस्ट करते हैं. सबसे पहले इसको ये करते हैं. हाँ, भैया ने क्या लिखा? हाँ, चाट जीपीटी. क्या रिजल्ट है अगर ये हम चलेंगे तो? अन- अगर ये दे तो इनपुट का नाइस, इट इज वर्किंग. अगर ये जीरो. Waiting incorrect output for is check. तो चैट जीपीटी लोड हुआ मदर चोद. इससे अच्छा तो किसी को
फिर जीरो। गलत गलत रिजल्ट दे रहा है। दिखता है। हम्म, ये नाइव अप्रोच है मादर चौथ। हम्म,
सब छुटिया हुआ है। भैया के वीडियो ही अच्छा चलो। Hey everyone, welcome back and let's write some more कितने neat code today. So today let's solve the problem minimum number of swaps to make the string balanced, a problem from last night's LeetCode contest. And I wish I could have uploaded it last night, but sorry about that. So let's do it this morning. We are given a zero index string S of even length n. That's important. It's even length because there are going to be exactly half of the characters are going to be opening brackets and exactly half of the characters are going to be closing brackets. And they give us some criteria on if a string is balanced, if and only if, either of these three criteria apply. But this definition of a balanced string is actually it's pretty much exactly what you would expect when it comes to balancing parentheses or balancing brackets, right? That definition up above, maybe it just overcomplicates things for some people, but basically whatever you think is valid for brackets is valid. So this is valid, but if we had it in the opposite order, if we had it like this is not valid, right? Like these brackets don't close each other, so this is invalid. Now we're given a string. It could be valid or invalid. This string is invalid. The example string is invalid as well. We want to know what's the minimum number of swaps, and we can swap any two characters in this input string. What's the minimum number of swaps to make the string S balanced? And I'm going to be showing you how to solve this problem in linear time and O of 1 memory. That means no extra memory is going to be needed for this problem, but it's kind of tricky. This is an easy solution to implement, but it's not easy to come up with. So let's explain how we can come up with a solution like this. And don't forget to like and subscribe if you find the video helpful. And consider checking out my Patreon where you can support the channel if you would like to. It's completely optional. You are not required, but thank you so much to the 30 patrons that I currently have. Thank you for supporting the channel. Now let's first try to actually understand this problem. So let's say we were given an input string like this. What's the minimum number of swaps to make this balance? Well, what's the problem here? This middle portion is pretty balanced to me, right? So what's the problem? Well, when we start, the first character in the string is a closing bracket. Now that's not good because the first character should never be the closing bracket, right? Like that just doesn't make sense. What exactly is it closing? There was nothing open in the first place. And this is true, if we just keep adding closing brackets, that just makes the problem worse because now we have 4 of them and we never closed anything, right? Nothing was ever open to close in the first place. So taking a look at this single closing bracket, we're definitely going to need to perform a swap. Now, the good thing is we have exactly half opening brackets and half closing brackets. So we just have to rearrange these. We don't have to change this. We just have to swap it with something else. Of course, we're going to swap it with an opening bracket, which we know we have an extra opening bracket somewhere, right? That's implied because there's half and half. Now, we don't actually have to perform this swap, and we don't have to know which ones we actually have to swap. We just have to know what's the minimum number. Of course, we'll have to make at least one swap because we have this opening or this closing bracket. Now, then we go through the rest of the string. We see an opening bracket. That's fine. So we had one closing, and then we had one opening. Now this is our second closing bracket, right? And at this point, actually, this closing bracket actually does have an अगर हमें स्टार्टिंग के ही स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में ही हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया, स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में ही क्लोजिंग ब्रैकेट हम इनकाउंटर करते हैं, हाँ, तो कम से कम मिनिमम एक स्वैप तो चाहिए ही। हमें मिनिमम एक, अरे यार क्या हो रहा है ये?
हमें मिनिमम एक स्वैप तो अरे फिर फक हमें मिनिमम एक स्वैप तो अगर हम स्टार्टिंग में ही क्लोजिंग ब्रैकेट इनकाउंटर करते हैं तो मिनिमम एक स्वैप तो चाहिए चाहिए ही हमें, क्योंकि लाइक क्लोज अगर इनकाउंटर किया हमने तो पहले तो हमें एक ओपनिंग ब्रैकेट चाहिए होगा ताकि वो क्लोज को हम बैलेंस कर सकें, ठीक है। opening bracket to match with it. So at this point, once we've gotten to this point, we've seen 3 characters, 3 brackets. We have 2 closing brackets and we have 1 opening bracket, right? We don't want to have more closing brackets than opening brackets. But at this point, we only have 1 closing bracket that's, mismatched or whatever. And then once we get to the last character, of course, we're completely balanced. 2 closing brackets, 2 opening brackets. So what I'm kind of getting at with this explanation is that we're going to be keeping track of what's the number of extra closing brackets that we have. That's what we're going to be keeping track of at any given point in time, right? So how the algorithm is going to work is we're going to scan through, starting at the beginning of the string, and then scanning through each character. We're going to स्टार्टिंग में ये बेसिकली मुझे पेंट पे आना चाहिए, यहाँ पेस्ट किया। सबसे पहले तो हम इसको क्रॉप करेंगे। अरे वाह, वेरी गुड। मादरचोद। हाँ, तो हमें तो सबसे पहले यहाँ पे एक पेंसिल चलेगा जिसका कलर रेड है। हाँ देखो, हमें स्टार्टिंग में ही क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया। क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया, तो अगर स्टार्टिंग में ही हमें क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गया तो इसका ये मतलब है कि इफ इफ अरे मादरचोद, ब्लैक चाहिए, माचुदा। if star if s dot char at अगर if s dot char at god knows क्या हो रहा है। if s dot char at 0 is equals to closing bracket हो गया, so minimum one swap will be required। एक स्टार्टिंग में ही अगर मुझे वो मिल गया, अब हम इतना सेलेक्ट नहीं, ये नहीं आया, इधर आया, here here at 0th index we encountered क्या, so minimum one swap will be required। keep track of at any given point in time what is the number of extra closing brackets we have, because if we have extra closing brackets at any What points, that's what is determines so if we need to perform a swap or if not. And then at the end we'll know what's the maximum number of swaps, what's the minimum number of swaps we need to perform to make this string balanced. So let's actually start with a simpler example than this one up above that I have. Let's start with the actual balanced example. Let's say we had 2 opening brackets and then 2 closing brackets. What would we do? Okay, we'd start at the first
opening bracket, right? And initially our extra close count is 0. So then we get to the opening bracket. What would we do with extra close count? Well, we'd have to set it to -1 because we don't have any extra closing brackets. We have extra opening brackets. We get to the second opening bracket. Yep, now we have 2 opening brackets. So -2 means we have 2 opening brackets, not closing brackets. Then we'd get to our first closing bracket. So we'd add 1 to this. So we'd say, okay, now we have -1. That means we have 1 extra opening bracket. Then we'd get to the last opening bracket, and then we'd add 1 again. Then this would be set to 0. That means at the end, we'd finally have 0 extra closing brackets. That means it's perfectly balanced, which is what we expect at the end. And what was at any given point in time, if you were paying attention, what was the maximum number of extra? एक मिनट. अरे यार, ये कीबोर्ड क्यों नहीं काम कर रहा? तुम डाउन हो गए क्या बबुआ? नहीं चलने लगा. नाइस, इट्स फाइन. तो Extra closing brackets we had? Well, the maximum was 0 because it only went negative. So since we never had any extra closing brackets, that means we didn't have to do anything, which makes sense, right? Because look, this is a balanced string. So of course, we're not going to have to do any swaps. So in the end, our answer is going to be 0. We don't have to perform any swaps. Now let's take a look at an example where we actually will have to perform some swaps. So you can see we already start out with the first character, we have a closing bracket. So what are we going to do? We're going to add 1 because we add 1 every time we get a closing bracket. क्या बोला इसने? इसने बोला type something and apply and design for highlight text and select style drop down. Over normal text and click update normal text to match. क्या है ये? यहाँ पे हम कौन सा है? ये आ गया consoles. Consoles 15 normal text. Update normal text to match. अरे वाह, बेहद खूबसूरत. Google Doc, Google Doc background color. क्या बोल रहा है? Select blank file, page setup, file, page setup, page color. थोड़ा सा ऐसा setup default. Okay.
अब एक और चीज होना है। नाइस, बेस्ट। अब मेरे आंखों में पेन भी नहीं होगा। हाँ, तो हम वो करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे काउंटिंग एक्स्ट्रा क्लोजिंग ब्रैकेट। Subtract 1 minus 1 every time we see an opening bracket. So add 1, we see a second closing bracket. So every time we get first character, we have a closing bracket. So what are we going to do? We're going to add 1 because we add 1 every time we get a closing bracket. We subtract 1 minus. So you can see we already start out with the first character, we have a closing bracket. So what are we going to do? We're going to add 1 because we add 1. So what we'll do is we will start counting extra closing brackets, just like we are doing here. And will decrement counter decrement counter if opening bracket. 1 every time we get a closing bracket. We subtract 1 minus 1 every time we see an opening bracket. So add 1, we see a second closing bracket, so add another value 2. We see a third closing bracket, so let's add another one 3. So far we have done 3 values in opening bracket. So add 1, we see a second 1 every time we see an opening bracket. So add 1, we see a second closing bracket, so add another value 2. We see a third closing bracket, so let's add another one 3. So far we have done 3. And keep and keep iterating the element of strings one by
Keep iterating the element of string one by one, and update the counter according to the condition. Close. तो ये इनकाउंटर किया 3, तो यहाँ पे आ गया 3। यार इसका कुछ करना पड़ेगा इमेज ऑप्शंस का। साइज इसको अल्टरनेटिव कुछ कर नहीं सकता। एडिट यू इंसर्ट इमेज match दो। Closing brackets. So this is our max so far, right? So let's keep track of that this time, actually formally. So the max closing bracket so far is 3. Then we get to an opening bracket. We will also store the count of max extra closing bracket. And then we get to a second opening bracket and a third opening bracket. So we have to subtract 3 after those 3 opening brackets. So now we're going to have 0. Now we're going to have 0 extra closing brackets, right? Because we just had. तो मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूँ और फिर यहाँ पे लाओ, यहाँ एन करो, डाउन शिफ्ट करो, यहाँ पिंक करो, इसको यहाँ लाओ और यहाँ पे लाओ। फिर इसमें रिसाइज कैसे कर सकते हैं? क्रॉप कर सकते हैं? ऐसे नहीं, क्रॉप ये शायद वर्क करेगा। हाँ ठीक है, हम क्या किए, पेंसिल पे हैं, साइज मेरे पास है, ये हो गया, ये हो गया +1 +2 प्लस, यहाँ पे काउंटर 1 था, 2 था, 3 था और यहाँ -1। क्या बेहद गंदा करते हैं हम। +1 छी कितना, +1 +1 +1 -1 -1 -1, ये ओवरऑल मेरे पास 3 हो गया। ओवरऑल 3 - 3 0 हो गया। अभी ठीक है ना? हम सेलेक्ट करते हैं, अरे वाह कितना खूबसूरत आया ऐसे अच्छा लग रहा था। इमेज को इन्वर्ट कर सकते हैं, इमेज ऑप्शन, कलर तो बहुत टाइम पास किया। 3 open brackets, but that doesn't change our maximum, right? We know at one point in time, which was over here, right, we had 3 extra closing brackets. So that's all we care about. What was the maximum at any given point in time? Now you can see we actually have one more closing bracket. So this 0 is now going to be -1, and then we get that was the opening bracket. This is a closing bracket. So then we add 1 again, and now we're back to 0. So our max at any given point in time actually happened to be 3, right? At any given point, we had 3 extra closing brackets. So does that mean? फिर यहाँ पे एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, ओपनिंग ब्रैकेट है, तो ये -1 हुआ, फिर +1 हुआ, फिर भी 0 हो जाएगा। if we
proceed further if we proceed with if we proceed with further iteration with further if we proceed with further iteration we will found that extra close is equals to 0 and max is equal to 3. Our answer equals 3, are we going to be returning the value 3? Well, 3 is the minimum number of swaps we have to make this balanced. But let me show you, what if we took this bracket and swapped it with this? So 3 denotes 3 denotes buck 3 max denotes what it denotes minimum min number of swap that needs to be minimum number of swap that needs to be minimum number of swap that mm, minimum swap to make the string balance. But कुछ क्या हो? नहीं भाई ऐसे ही चाहिए था but one, and we took this bracket and swapped it with this one. Well, what would we have in that case? Well, we'd have something that looks like this. And this is pretty balanced to me, isn't it? This is actually a balanced string. So I just showed you it's actually possible to do this in 2 swaps, right? 2 swaps is enough, not 3. Why is that the case? Let me just explain to you. So we noticed how but in just 2 swaps it can be done too. Doom. इसको एक्स करते हैं क्या यार चला गया क्या अगर तुम देखोगे तो ये हुआ एक स्वैप और 2 स्वैप मैंने 2 ये हुआ स्वैप 2 स्वैप में भी हो जाएगा ये in just 2 swap it can be done too.
how at this point in time, right, we had 3 extra closing brackets. What happens if I make a single swap? What happens if I make a single swap like this one? If I swap these two, then see we had 3 closing brackets. That changes to being 1 open bracket and then 2 closing brackets, right? So getting a little messy, but hopefully you can see this part, right? We have 3 brackets here, 1 open and then 2 closed, right? Previously we had 3 extra closing brackets. Over here, how many do we have? Do we have 2 extra closing brackets? No, we actually have only a single 1 extra closing bracket. Because when we did the swap, we took 3 closing brackets and turned it into 2 closing brackets, but we also changed one of the brackets to being an open bracket, which cancels out one of the closing brackets, right? Like these 2 brackets over here, they cancel each other out, and then we're left with a single closing bracket. What I'm saying is each swap actually gets rid of 2 extra closing brackets. So in the end, if we had 3 as our maximum, right? 3 closing brackets as our maximum, what we actually want to do is divide that by 2. Or in other words, we actually want to take 3 plus 1 and then divide it by 2, which gives us the value 2, because every operation will get rid of 2 extra closing parentheses. So in one operation, we can take 3 So we are getting, क्या बोला and भैया ने? then divide it by 2, which gives us the value 2, because every operation will get rid of 2 extra closing Every operation will get rid of every operation will get rid of every operation will get rid of oh, 2 extra brackets. parentheses. So in 2. Or in other words, we actually want to take 3 plus 1 and then divide it by 2, which gives us the value 2, because every operation will get rid of 2 extra closing parentheses. Extra closing parenthesis. Parenthesis. So in one operation, we can take 3 and bring it down to 1. And then with another operation, we can take 1 and bring it down to 0, which will give us 0 extra closing brackets. So that was really long and confusing, but I hope it makes sense because the code is going to be really short. And I think the code will make even more sense Because after every each swap, 2 brackets will settle at a place. Settle at a place. So 2 bracket will settle. So what? So 3 plus 1 divided plus 1 or 2 divided by 2 very take the required result.
because it takes a lot to actually get to this solution, like I mentioned, but coding it up is actually very easy. We only do a single pass, no extra memory, linear time, and you just have to remember this simple rule of keeping track of extra closing parentheses and then dividing it by 2 at the end. With that being said, we can now jump into the code. Okay, so now let's get into the code. And like I said, we're going to keep track of 2 variables, which is the closing count, the extra closing count, in other words, and we're going to be keeping track of whatever the maximum of that happens to be. Let's just call it max close. So they'll both initially be 0. Next, like I mentioned, it's going to be a linear scan going through every single character in the input string. They could be one of 2 values. It could be an opening bracket, which means, we're balanced, and the else case is if it's a closing bracket. Now, if it's an open bracket, we're going to take closing and decrement it by 1, because that means we don't have any extra closing brackets, right? Now, if we do have a closing bracket, we're going to increment our extra closing count by 1. And on every single iteration, we want to know what's the max closing count, so we're always going to be looking for that. So we'll take the max of close and the max of max close. And then at the end, right, we have our max closing count. Remember, what do we want to do with it? We don't want to just straight return the max closing count. We want to add 1 to the max closing count and then divide it by 2 integer division, which takes 2 slashes in Python. This is the entire solution, because this is the minimum number of swaps we will need, because we'll need at least 1 swap to get rid of 2 extra closing parentheses. So this is the entire solution. But I hope that this was helpful. If it was, please like and subscribe. It supports the channel a lot. Consider checking out my Patreon. The link will be in the description below, and I'll hopefully see you pretty soon. Thanks for watching. Hey everyone, welcome back, and let's write some more. We will write, but not now. We will do it again tomorrow. अभी गाना सुनते हैं. ये रहा हमारा pseudo कोड. क्या कर रहे हैं हम? मेरे पास 2 वेरिएबल्स होंगे एक्स्ट्रा. दिल भर जाता है सोचूं जब भी बातें तेरी जाना, वो देखते रहना चेहरा तेरा आंखों में खो जाना, क्या पागलपन था सोचना. एक्स्ट्रा क्लोजिंग ब्रैकेट होगा, मैक्स होगा. और आई टू लेंथ एस माइनस 1 चाहेंगे. इफ एस ऑफ आई इज इक्वल्स टू क्लोजिंग ब्रैकेट होगा. गाना बहुत तेज चल रहा. एक्स्ट्रा क्लोजिंग ब्रैकेट्स को इंक्रीमेंट करेंगे, मैक्स निकालेंगे. इफ एस ऑफ आई इज इक्वल्स टू ओपनिंग ब्रैकेट होगा तो एक्स्ट्रा क्लोजिंग. ठीक है. तू जीती थी पर बेटा आज नहीं, खोने का डर था तभी सब में सह रहा था, बोलना था काफी करने देती बात नहीं, हम हल्के थे तभी ये रिश्ता लगने लगा हैवी, मैं तो तड़पूंगा. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा ऑर्डर ऑफ और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी माइंड गेम्स के लिए जेम्स नहीं था कभी रेडी, ऑर्डर ऑफ साचे में हूँ पलता, ये साला खोने का डर खुद ही खो दे खबर, मेरा लो फेस चले दिन रात, ये छोटे मोटे हडल आज होंगे न कल, तू मुझे खोजे पर मैं न मिलता. सजना दूर आ गया. इसको करता हूँ. ये है मेरे पास. दिख रही है तू ये दिन रात, तुझे न पहचाना क्यों, न सच तेरा जाना क्यों, गलत फहमी थी तू मेरी, था मैं अनजाना क्यों. हम क्या कर रहे हैं? मेरे पास 2 वेरिएबल्स होंगे, एंड काउंट क्लोजिंग ब्रैकेट इक्वल्स टू 0. एक मैच होगा जो इक्वल्स टू 0 होगा. और क्या होगा? अब कुछ नहीं, हम इटरेट करना स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग को. फॉर ईच कर सकते हैं. फॉर ईच कैरेक्टर चल पे फॉर ईच सी इन एस
क्या रह रहे, शायद ऐसे ही करता हूँ, पता नहीं। कैरेक्टर एरर में कन्वर्ट कर दिया, फॉर लूप में आ गया। अब हम फॉर लूप में कैसे, अगर इफ चेक करेंगे, इफ कंडीशन क्या रहेगा, इफ सी इज इक्वल्स टू व्हाट, इफ सी इज इक्वल्स टू क्लोजिंग ब्रैकेट, तो हम क्या कर रहे हैं, हम काउंट क्लोजिंग ब्रैकेट्स को प्लस प्लस कर रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं, मैक्स इक्वल टू मैथ डॉट मैक्स, यहाँ पे मैक्स आया, काउंट क्लोजिंग ब्रैकेट आ गया, एल्स में क्या करेंगे, काउंट क्लोजिंग ब्रैकेट्स को, अरे वाह 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 वाह, डिक्रीमेंट करेंगे। अब रिटर्न करेंगे, क्या रिटर्न करेंगे, जो भी मैक्स होगा, मैक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। हम इसको चेक करते हैं, स्ट्रिंग एस इक्वल टू ये इसको बना देते हैं पब्लिक स्टैटिक आउट किया, नेम स्वैप में एस किया, वन, नाइस। इसको अपडेट करते हैं, इसको नाइस, खाली मकान जमी पे मेरा बोझ, पेल्स ऑन माय पाम, फिर भुला देता मैं होश। अब तो बस ख्यालों में मिलाता उनसे रोज, इमारतों में खोना चाहूं कहता था उन्हें, इलाके जो मनाते पैरों के निशान है, दिला से देती दुनिया की तू खुद को रोक मत, वो दुनिया अब कहाँ, अकेला मैं वीराने में, इरादे थे कि उनके साथ देखूंगा मैं सब, पहचानूंगा इंसान, पाया मैंने उनको और मैंने 2 सबमिशन किए थे, ये वाला कैसे ट्वीट किए थे, लेंथ से किया था, फिर एस डॉट कैरेक्टर एट आई निकाला, तो यहाँ पे मैंने एस को कैरेक्टर एरर में कन्वर्ट करके फिर ऐसा सी उठाया, आई एम ही कर। जब भी आती तेरी याद, Add comment on each step what we are doing. MTYTI, intuition and approach and time complexity and space complexity, सब दो सब चाहिए मुझे, उठाओ इधर लाओ फिर से डालो, पिनाक धर हर सुंदर धर, पिनाक धर हर पिनाक धर हर सुंदर धर, पिनाक धर हर, गंगा
चंद्रचूड़ शिव शंकर पार्वती रमना निनगे नमो नमः। सर पे आके सर झुका के हर व्यथा के हल मैं मांगू तुमसे भोले था मैं तुमको ये चैट नजर जीपीटी। अगर गिरा मैं कल लगाना हाथ तू अटल तेरी ही वजह से मेरी सांसें रही चल दर पे आके सर झुका के हर व्यथा के हल मैं मांगू तुमसे भोले था मैं तुमको ये नजर डगर मिलाना कोई तेरे बिना महाकाल अकेला ही चला हूँ तुझे आशाओं में भर तू नाचता के लाश में तू गाने में भी रहता दीवाने के हृदय में तू जुबान पे भी रहता तू काशी में समाया केदार के तू पर्वतों पे जहाँ जलती काया तू मसान में भी रहता तूफान में भी रहता रहता है एकांत में कालकूट पी लिया था वो भी एक सांस में नीलकंठ मेरे कुछ मांगा नहीं वापसी में देवरस प्याला सारों में ही बांट के आपकी हथेली में है सारा ही ब्रह्मांड ताज का वो क्या करेंगे सर पे उनके चांद विषाद की घड़ी में जो न साथ छोड़े तेरा आदिनाथ नाम है जो हौसले का बांध नूर तेरे सेवकों में जैसे चमके क्या लिखा है? The intuition behind this approach is to traverse the string and keep track of the count of the closing brackets. Count closing bracket. Additionally, maintain a variable max to track the maximum count of closing bracket in count during the traversal. The idea is that the maximum count of closing represents the balance portion of the string. Okay, टाइम को रिकॉर्ड ऑफ फैन स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। चलो हो गया, बहुत हो गया। किधर गए भैया? चंद्रचूड़ शिव शंकर पार्वती रमना निनगे नमो नमः। नूर तेरे सेवकों में जैसे चमके चंद्रमा बड़ा बाय, मैं निकलता हूँ। इधर भी हमने सब कर दिया है। हाथों में लिखाई मुझे दे दी जैसे चंद्रहास तेरे बिना भोले लग रहा है रंज पास तेरे बिना